कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। And that's the move on cryptocurrencies. And ever since we saw President Trump come to office, we've seen a rally in cryptocurrencies. Is there, at this point in time, I mean, work was on a cryptocurrency paper here as well, and of course we brought in the tax. But the RBI has been steadfast in saying no to cryptocurrencies. What is our approach likely to be now in light of the many global developments that have taken place on cryptocurrencies? Any change in stance, any change in thinking at this point in time, sir? Cryptocurrency, as we are aware, we have done a discussion paper, including at the senior level participation from the Reserve Bank of India, and the committee had finalized the discussion paper. But thereafter, we find that when it was about to be issued, that several jurisdictions, and you named one, but more than one jurisdictions have changed their position on crypto assets in terms of their scope, where they see the utility, including for settlement, multilateral settlement of payments, cross-border payments. So there's one side, they're saying that much stronger use of crypto assets as a stable coin, which will have a large implications for emerging economy like ours. The second one, using it as a multilateral settlement mechanism, which will again has a very major implications that how the global systems are organized. So in that context, we are recalibrating the paper, because the purpose of that paper is to pose the right questions to the stakeholders so that we get the right answers in terms of an appropriate answer to inform our policy making. But what does the recalibration mean, sir? Because at this point in time, the RBI was very clear. They don't believe that cryptocurrency is the road to take at all. Is there a change in approach, given the fact that countries like the US are now full-fledgedly moving forward with cryptocurrencies? So I will mention it that in 2023, when India had the G20 presidency, at that point of time, the stances of various jurisdictions, and I'm using the word jurisdictions instead of using the word countries, was fairly well known, and there was a stable position each one of them have taken. And this is one asset class that doesn't believe in the borders. We have to, what others will do, we have to be fully conscious of before we decide our own policies. It is not just a stable coin. At the 2023 issue was only different jurisdictions were looking for crypto assets as a stable coin, right. Which is not a stable coin, doesn't have any much value. But a stable coin can cause a significant risk for our economy, for all emerging economies. Then a new element has come in. Some jurisdictions talking about a cross-border settlement doing it here, which is altogether a new dimension being brought in. So that requires to getting back not from the ground zero, but certainly going to the last stages of the drawing board and saying that do we have to recalibrate few of the questions so that we understand the risks very clearly and what can be the possible policy responses. So by when do you believe this recalibration exercise will be over? And I'll get Mr. Nagaraju to comment on that as well. I'll say that soon, but it may take a couple of months, but not longer. जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो क्लिप देख लिया होगा। तो यहाँ पर अजय शेख ने साफ साफ जो क्रिप्टो के ऊपर सवाल किए गए थे कि अमेरिका क्रिप्टो करेंसी को काफ़ी ज़्यादा एडॉप्ट कर रहा है, काफ़ी पॉजिटिव साइड देख रहा है, काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बातें कर रहा है, एसेट की तरह अपना रहा है। और हमारे इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा टैक्स है, 1% TDS है, इतना ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स एंड TDS लगाया हुआ है और आप सेटअप भी नहीं दे रहे हैं। आप क्रिप्टो को क्या देखते हैं? तो अजय शेख ने कहा कि ग्लोबली ये सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद, वैश्विक बदलाव उसने देखा क्रिप्टो के अंदर, ये चीज़ें देखने के बाद हम जल्दी से जल्दी डिस्कशन पेपर है वो लाने वाले हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाएगी। ये जो अमेरिका के अंदर चीज़ें हो रही हैं, दूसरी कंट्री के अंदर पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए डिस्कशन पेपर है बहुत जल्दी इंडिया के अंदर भी आ सकते हैं। और सवाल ये भी कहा गया कि कब तक, मतलब बहुत जल्द, मतलब कब तक? तो उसने कहा कि कपल ऑफ मंथ्स के अंदर अंदर आ जाएगा, मतलब बहुत जल्दी हमारे सामने डिस्कशन पेपर आएगा। मैं भी मेरी तरफ से बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर ये चीज़ें हमारे सामने पॉजिटिव आए तो हमारे इन्वेस्टर के लिए और इंडियंस के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर ये भी चीज़ें हमने देखे हैं कि क्रिप्टो के अंदर टैक्स एंड TDS लगने के बाद अच्छे अच्छे डेवलपर बाहर जाके प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं। ये चीज़ें अगर इंडिया के अंदर होती तो इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता। तो अगर जल्दी से जल्दी ये कदम उठाया जाता है तो मेरे हिसाब से मे बी बेटर क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे ही चलने वाला है या फिर कोई बदलाव आने वाला है?